Hi everyone. As I said in the last video, in this we are going to discuss the important judgments of our former Honorable Chief Justice of India, Honorable Justice D.Y. Chandrachud. These are very important judgments. These have been compiled up since the time he was elevated to the Supreme Court judge and during his tenure as the Honorable Chief Justice of India. So first there would be the cases which will be dealing with the recent ones, and उसके बाद पहले के जो cases हैं जल्दी जल्दी एक एक लाइन में बेसिकली ये केसेस हमेशा के लिए ज़रूरी हो गए हैं, इसलिए जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स. ठीक है. State of Punjab and others versus Davinder Singh and others 2024 judgment. It's a 9 judges bench decision, very important constitution bench ban gayi hai ye. Sub classification of scheduled caste was held to be permissible, that is they can be granted separate quotas for more backward classes within the scheduled caste categories. So this was a judgment, very important judgment. All these judgments, please do go through them whenever there is examination, because all the recent judgments which have changed the constitutional positions as well of different strata of the society have been discussed in this. ठीक है. Second is the case of Aligarh Muslim University through its registrar Faizan Mustafa versus Naresh Agarwal 2024 judgment. इसे हमने अभी recently discuss किया था. It's also a 7 judges bench decision wherein the judgment of S. Aziz Pasha versus Union of India of 1967 was overturned. It was held that an institution which was incorporated by a statute, it can be claimed as a minority institution, and just because it is a institution created by statute, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो institution है ये अब हम minority नहीं रहा. तो इसमें अजीज़ बाशा को ओवरटर्न किया गया है और AMU के माइनॉरिटी स्टेटस को अब ये डिसाइड करना बचा है. बट जहाँ वो ये चीज़ इतनी बोली गई थी कि माइनॉरिटी नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उससे अब ओवर रूल कर दिया गया है. ठीक है. In re Manoj Tebriwal Akash, here this is a case related to bulldozer justice, जहाँ पे कहा गया that it is unacceptable, it is against the rule of law. अगर ये हम परमिट कर रहे हैं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन जो हमने दे रखा है राइट टू प्रॉपर्टी को, हम उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं. ठीक है. इट वुड बी रिड्यूस टू अ डेड लेटर. This judgment of in re Manoj Tebriwal Akash 2024 judgment. Society for Enlightenment and Voluntary Action and another versus Union of India. Now, child marriage is a menace to the society, to the children, to the future of our country. In this very judgment, it was held that child marriage violates the right of self-determination, choice, autonomy, sexuality, health and education of children, resulting in infraction of their rights, which is so much violative of Article 21 of the Constitution. The guidelines were laid down for prevention of child marriages. ठीक है. Please do remember the case names, they are very important. Current GK बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे आपका यूपी हो, बिहार हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी स्टेट का. They are also important from your interview perspective, so please Mineral Area Development Authority versus Messrs Steel Authority of India and others. It's a 9 judges bench decision. It was held that states have power to levy tax on mineral rights. ठीक है. 2 एंट्रीज थी, एक यूनियन लिस्ट की एक स्टेट लिस्ट की. यूनियन लिस्ट
एंट्री 54 जो कहता है कि आप माइंस और मिनरल से रिलेटेड रेगुलेशन जो है वो सब यूनियन पार्लियामेंट करता है। एंट्री 49 कहते हैं जो स्टेट लिस्ट के पास है लैंड, कि लैंड के ऊपर कंट्रोल स्टेट का रहता है। मिनरल बेयरिंग लैंड्स जो हैं वो लैंड में ही लैंड के ही टर्म में आएंगे, ये चीज़ हमारी हेल्ड की गई इस केस में। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मेसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। States have power to levy tax on mineral rights, and that the Union Law, Mines and Minerals Development and Regulation Act do not limit the power of such power of the states. ठीक है। State of UP versus Messrs. Lalta Prasad Vaish 2024 judgment. It was held that states have the power to regulate the denatured spirit or इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ठीक है, सिर्फ जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है उस पर स्टेट का कंट्रोल रहेगा। ये बात हमें कहाँ देखने को मिलती है? एंट्री 8 में स्टेट लिस्ट की, लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब सिर्फ वो नहीं है, वो लिकर नहीं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है, रादर इट इंक्लूड्स एवरी लिकर, एवरी काइंड ऑफ लिकर, हेंस डीनेचर्ड स्पिरिट और इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी उसमें आएगा। ठीक है, द टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिकर कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड नैरोली टू इंक्लूड ओनली द अल्कोहल विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. It was held that liquids which contain alcohol which can be used or misused for human consumption, they fall within the term of intoxicating liquor. ठीक है, ये पुराने जजमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा था डिवाकेशन होगा, रीसेंट जजमेंट्स एंड द ओल्डर जजमेंट्स वुड बी डिस्कस्ड, ईयर वाइज रहेंगे. सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेर इन इट वॉज हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली रिफ्यूज्ड टू ग्रांट एनी लीगल रिकोगनिशन टू दी क्यूअर मैरिजेस. ठीक है, LGBTQ होता है, उसके क्यूअर मैरिजेस जो हैं उनको कोई लीगल रिकग्निशन नहीं देगा. वाई? बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द डोमेन ऑफ जुडिशरी. दैट इज समथिंग विच ओनली लेजिस्लेचर कैन एक्ट अपॉन. Cox and Kings Limited versus SAP India Private Limited, it was held that an agreement can bind, arbitration agreement can even bind the parties who are not the parties to that agreement, and this can be who are not signatories, and this can be done under the group of companies doctrine. ठीक है, in Article 370 of the Constitution of India, the Supreme Court upheld the Union Government's decision of 2019, जो हमने जिससे JNK का जो स्पेशल स्टेटस था उसे हटाया था, इसको अपहेल्ड करा है. सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर SCI वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, the office of Chief Justice of India was held to be a public authority under Right to Information Act. Secretary, Ministry of Defence versus Babita Punia, Lieutenant Colonel Nitisha and others versus Union of India. As the name can indicate, this is related to granting women officers who were actually on SSC, Short Service Commission, they to be considered for the permanent commission also in army. ठीक है, the evaluation which was deployed by the army, मतलब जो बबीता पूनिया में कहा गया था उस जजमेंट को सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन कहा गया, कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट द वुमेन ऑफिसर्स, विच इज़ एन एनेस्थेसिया टू सब्सटैंटिव इक्वालिटी. डू रिमेंबर दिस लाइन, दैट दिस इज अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इफ यू आर नॉट ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू द वुमेन ऑफिसर्स. ठीक है, तब तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग इज it is made a separate offence under Bharatiya Nyaya Sanhita. Hence this judgment is important because the court laid down different guidelines for preventive, remedial and punitive measures to combat mob lynching. ठीक है, lynching is an affront to the rule of law and the exalted values of the constitution. ठीक है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारा अडल्ट्री का प्रोविजन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया. 497. Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala, Sabrimala Temple case. Women की entry just because they are women belonging to age group of 10 to 60 is unconstitutional. Gender-based exclusion, it stigmatizes the woman, and which is against, it is violative of Article 17 as well. ठीक है, the exclusion amounts to untouchability. स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 जजमेंट. कोर्ट प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीम होंगी सन
लाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन, इसी केस से, इसी जजमेंट से हमें ये देखने को मिलता है। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(g रिकग्नाइज करता है राइट टू नो एंड टू रिसीव इंफॉर्मेशन। नाउ व्हेन इट इज़ क्लब्ड विद राइट टू जस्टिस विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21, all this promotes live streaming. Honorable Justice K.S. Puttaswamy, retired, and another versus Union of India, right to privacy इसमें held किया गया था, upheld किया गया था as a right, as an important aspect of right to life. Privacy include करता है reproductive autonomy, इस चीज़ को भी बोला गया, ठीक है। Right to privacy is a fundamental right protected under Article 21. Privacy includes in its core preservation of personal intimacies, sanctity of family life, marriage, procreation, home, and sexual orientation. So privacy, it basically also includes right to be left alone. Reproductive autonomy होगी। Common cause, a registered society versus Union of India, right to die with dignity is a fundamental right. Very very important. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया को लीगली वैलिडिटी मिल गई थी। राइट टू लाइफ और लिबर्टी क्या इंक्लूड करता है? राइट टू लिव एंड डाई विद डिग्निटी, ठीक है। शफीन जहान वर्सेस अशोकन के.एम. और शक्ति वहीनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दोनों जजमेंट्स राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस इसको रिकॉग्नाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अगर दो अडल्ट कंसेंचुअली चूज करते हैं अपने लाइफ पार्टनर्स को, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर चॉइस एंड दिस इज प्रोटेक्टेड, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो आप खाप पंचायत, ऑनर किलिंग, ये सब जो आप कर रहे हैं, honor killings by the Khap Panchayat, that is unconstitutional. It is against the very fabric of the constitution, ठीक है, of article 21. नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सेक्शन 377 को पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया। कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द कोर्स ऑफ नेचर क्रिमिनल ऑफेंस है, ये था आपका सेक्शन 377। सो नाउ बेसिकली इट रिकॉग्नाइजेज इट इज़ ओनली पार्शियली वैलिड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स और एनी अदर ग्राउंड प्लस सेक्स वुड फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 15। यहाँ पे बोला गया दैट आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इज इंक्लूसिव ऑफ सेक्शुअल orientation and therefore any discrimination based on sexual orientation is to be punished, ठीक है, it's punishable. Last but not the least, promulgation of ordinances, हमारे आर्टिकल 213 एंड 123 जहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। उसके मिसयूज़ को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक जजमेंट आया, कृष्ण कुमार सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, wherein it was held that re-promulgation of ordinances is a fraud on the constitution. It's a subversion of democratic legislative process, ठीक है। और कोई भी जो ऑर्डिनेंस आप इशू कर रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। नाउ ऑल दीज जजमेंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर लीगल करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। प्लीज़ डू रिवाइज देम वेन एवर देर इज़ योर एग्जामिनेशन। छोटा सा वीडियो आपका 12-13 मिनट में पिछले 5 साल के जितने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, 5-6 साल के, वो पूरे आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन and please do let us know if we can be of any help to you all. If there is any confusion, any problem, any issues, you can contact with our team of Target for IQ. Thank you everyone.